Very good evening and welcome. Our poll yatra continues here on Times Now, broadcasting live from Gonda today, which is going to poll on the 27th in the fifth phase of this election. But the focus, ladies and gentlemen, is going to be the fourth phase, which is going to vote tomorrow. The Awadh region, Lucknow including, is going to vote tomorrow. And all eyes would be on the 59 seats. Which way would they swing? So far, all bets seem to be on a neck-to-neck contest. This possibly could be a crucial, very, very crucial as far as both the sides, the BJP and the Samajwadi Party alliance is concerned. I am Ankit Tyagi, and with me, my colleague Madhav, who is joining you from Lucknow. Madhav, just give our viewers a sense of what's the big picture. What is it that is at stake in the fourth phase? Well, a very quick overview, Ankit. 59 seats, as you rightly mentioned, in this fourth phase. 45 of these 59 seats are in the Awadh region. And that includes, of course, city of Lucknow, the capital of the state. And what is very significant from the perspective of the BJP is that they had managed 51 seats of these 59. That is a conversion ratio of 86%. And that's the sort of success that the BJP is hoping to replicate. It's also equally important for the opposition to actually make a dent in segments such as these, phases such as these, if they are to actually go past the magic number. And that is also a concern that political analysts also express, given the fact that a number of swing seats that have in fact returned different results in this particular phase. Very importantly, they will also be looking at the farm belt areas of Lakhimpur as well as Pilibhit that also go to the polls in this particular phase. And also from the perspective of the Congress party, Rai Bareli, of course, has been a bastion. That's where Congress interim President Sonia Gandhi has been elected to the Lok Sabha many times around. But this time around, with the incumbent Congress MLA Aditi Singh switching sides, what's going to happen to the party and its future in that particular area is also going to be something that we're looking at. Very, very important factors which are going to go into play before people go out and vote. It will be important for the BJP to possibly repeat the performance and for the Samajwadi Party to try and pull back as much as they could, as they were able to do in 2012. Now, very quickly, as the tempo is building up, ladies and gentlemen, to the final few rounds, after the fourth phase, it will be more than half of the battle of Uttar Pradesh would be over. The political parties are leaving no stone unturned. All kinds of barbs are being exchanged. Take a look. देखो 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देने के लिए नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? बाबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। 10 मार्च के बाद आने दीजिए सरकार, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 2 करोड़। बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर। You will hear everything. Nothing is off limit in this battle of Uttar Pradesh. But Madhav, are these the issues that people are talking about, which the politicians are raising from the podium, or is the Janta facing something else?
Well, that's a very big question. And in fact, whose narrative is closer to the people's heart is certainly something that will also be known when the counting day comes on the 10th of March. But what are the issues that are primarily being raised by both sides? The BJP has raised its track record as far as law and order. They say that the Gundaism that was prevalent during SP's regime has now all but come to an end. There has been strict action that has been taken by the police to rein in all sorts of mafias. And that's why they're saying the common people are freer to go out later. Women are also safer to that extent. That's the narrative that BJP has tried to already build out. Also, the welfare schemes in multiple areas, both at the level of state and centre, that have, they believe, touched the lives of the people, whether it is basic facilities like cooking gas, water, so on and so forth, or even sanitation and other schemes. They believe that this is certainly going to hold them in good stead. And also the double engine narrative, which we've seen several times being used, which is to tell the people that it is beneficial for them to have a government at both the state and central level and decisive leadership at both levels. The opposition, however, Samajwadi Party, has raised issues such as unemployment and the plight really of citizens and youth who do not have jobs. And this is something that we see not just in Uttar Pradesh but in other states also. Opposition parties lead and bring out. Also, of course, Lakhimpur violence is what they use to counter the narrative of a good law and order system in the state. That, along with Hathras, has been one of the key issues, or some of the key issues in the law and order front. And also the stray cattle issue is something that Samajwadi Party has raised to the course of this election. So which of these issues and which aspect of these issues are actually closer to the people's heart when it comes to Uttar Pradesh? That, I think, is a very big question. Absolutely, and whether the words that we hear from the podium, that sway the voter, or what they experience in their life, that is a crucial factor when they go out and vote. And Madhav was talking about the stray cattle issue. I am in Gonda. Last time, the Bharatiya Janata Party had a clean sweep on the 7 seats of this entire region. The MP from here, in fact, is Bahubali, a very strong man. His son is an MLA from one of the constituencies. But the stray cattle issue, ladies and gentlemen, is something that we have seen very, very closely at this moment. In fact, I experienced this firsthand. Take a look at this ground report. In the travels for the last 4 weeks, one problem in Uttar Pradesh that has become a big issue is the problem of stray cattle, which is destroying the fields of the farmers. I am right now in Gonda, and this is on the borders. I mean, this is in eastern Uttar Pradesh, but whether it is west, east, or Awadh region, this is a common problem. You must be seeing these, stray cattle, which is right now in the middle of this field. This has become a problem and an issue that you keep hearing everywhere you go. Farmers now say that in the morning, during the day, they have to in fact go and till their fields, and in the night they have to stand guard against all these stray cattle. The government in Uttar Pradesh, Yogi Adityanath's government, has made many big claims as far as the stray cattle is concerned, or as it is known as Chhutta Pashu in Uttar Pradesh, but you hardly see any impact on the ground. Now, while the political discourse talks about cycle and terrorism, Pakistan, Jinnah, the real issues on the ground, ladies and gentlemen, which are concerning the farmers and the people of Uttar Pradesh, and the biggest one, of course, is the stray cattle. Whether the people vote on this is the big question, but at least as of now, the farmers all across Uttar Pradesh are complaining about the stray cattle issue. So much so that the Prime Minister had to come on stage and say that if the government is re-elected, they are going to take immediate steps to address the problem. But till then, in Uttar Pradesh, stray cattle is the issue, not what you hear from political podiums. All right, Anila Singh of the Bharatiya Janata Party is with me at this moment. We also have Raghuvendra Dubey of the Samajwadi Party joining us at this moment. Thank you so much. Just a few hours to go, Anila ji, before the voting for the 4th phase takes place in Uttar Pradesh. There is a disconnect, at least what the people have also told me, and what the leaders are speaking from the stage and what they're experiencing from the ground. You heard the ground report as well. That's a big issue. My Ram to everyone, and indeed the Chhutta Pashu is a problem,
Earlier also government of Uttar Pradesh, they had tried to correct it, but once we are again going to form a government after 10th of March, then definitely we are going to correct this problem altogether. Yeah, indeed, we are not ignoring the demand of the farmers that they have problem from Chutta Pashu, that is, free cattle, which is moving and at the night time or even during the daytime, they venture into their fields and definitely their crop is destroyed. We do recognize this problem, and I promise you on the behalf of Bharatiya Janata Party that yes, this problem will be altogether corrected by the government, Bharatiya Janata Party's government, after 10th of March. But, before I go back to Anila ji, Raghuvendra Dubey ji, छुट्टा पशु का वो कह रहे हैं, मोदी जी ने भी एड्रेस कर दिया है। मोदी जी ने अपने रैली से भी बोला कि देखिए हम इसको सुधार देंगे, हमारे पास बहुत बड़ी स्कीम है, एक बार हम दोबारा चुन के आ जाएंगे तो इसके ऊपर हम बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं। हेलो 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 सर, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है, क्यों क्या आपको लगता है कि छुट्टा पशु का जो पूरा मुद्दा है वो समाजवादी पार्टी को सत्ता तक ले जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं कि इसका समाधान ढूंढ लिया है, कर देंगे जल्दी। देखिए, लगातार आपने देखा कि केंद्र में 7.5 साल सरकार इनकी हो गई, 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में हो गई। जिस तरीके से आवारा पशुओं ने, सांडों ने किसानों को बर्बाद किया, उनकी फसल खाई, इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी हर सभा में ये मुद्दा उठा रहे, जब इनको लगा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया, 2019 में भी इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। जब ये बहुत मुद्दा बड़ा हो गया, किसानों की ये परेशानी थी, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में सोचा नहीं, और बहुत सारे किसान पूरे उत्तर प्रदेश के बर्बाद हुए। और बहुत सारे में ऐसा भी हुआ कि जो सांड के द्वारा बहुत सारे किसान मर गए, जिनको उन्होंने मार दिया, किसान उसमें मरे। और केवल एक ही आजीविका है किसान की, वो भी है उसकी खेती किसानी। इतनी मेहनत करने के बाद अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, क्या हालात होंगे, वो कैसे अपना घर का खर्चा चला रहा होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। That is an observation also, ladies and gentlemen, that I in fact have seen firsthand when I was talking to people of Gonda, especially the small farmer. For the small farmer, it becomes very, very difficult to survive, sustain in a very small piece of land holding. They grow something, and within a night, these stray cattle would come and completely destroy that land, and that is going to be a very, very big problem for the small farmer. But are they going to vote on that issue, or they get divided into caste lines before they go and press that button? Listen in to what the people of Gonda said. हेला जो यहाँ पर स्ट्रे कैटल यानी कि आवारा पशु जो है, उसका जो लोकल नाम है, उससे बचाने के लिए अब किसानों ने इस तरह की मचाने भी पूरे रात और दिन तैनाती रहती है उनकी। ये मचान आपने बनाई है? कब से बनाई है? अरे बनाए तो बहुत काफी समय हो गया कि हाँ 2-4-10 साल हो जाता है। हाँ ये हाल। तो ये आवारा पशु पूरी रात यहीं रहते हैं आप? हाँ पूरी रात रहते हैं, पूरी रात रहते हैं। और दिन में काम करते हैं? हम दिन में काम करते हैं, क्या दिन में भी देखना पड़ता है? दिन में भी देखना पड़ता है? हाँ दिन में भी देखना पड़ता है, रात और दिन दोनों देखना पड़ता है। तो कितनी बड़ी समस्या है ये कि बहेला? अरे समस्या तो इतनी है कि समझ लो कि रोटी जोगी इंसान नहीं रह गया। हाँ हाँ ये बुरी हाल है। कितना, बहुत सारे आते हैं? अरे बात इतना नहीं, 20-20, 25-25 तो एक लागन आ जाते हैं पूरा। हाँ इकट्ठे ही। हाँ, और खेत खराब कर देते हैं। अरे खेत की का किया, देख लो कुछ रह गया। ये यहाँ चर चुके हैं यहाँ पे? ये सब चर चुके, इतना थोड़ी होता है। ये बड़ा हो जाता है क्या? हाँ अरे बहुत मतलब जैसा पीछे है वो पीला। हाँ वो बच गया है। हाँ वो अंदर देखा ना, पीछे वाला जो खेत है, वो जो आप देख रहे हैं पीछे खेत, वहाँ अगर सरसों को ऐसा बच जाए और वो ना चर पाए तो उतना बड़ा सरसों हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी ये हाल है आपके इस खेत का। छुट्टा पशु का ये है पैर, खाए तो हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गड्ढे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो छुट्टा पशु होता है, बहिल्ला जिसको यहाँ बोलते हैं, वो सब सांड के, गाय के सब ये पैर हैं, खेतों के अंदर घुस के सब चर गए। ये अभी लोग कहते हैं कि गांव वालों ने खुद ही अपने छोड़ रखे हैं पशु। हाँ छोड़ तो दिए हैं, लेकिन बाउंडेशन ये लगा रखे हैं कि जैसे बाहर जाते थे तो उसी के लिए रोक दिए हैं।
जो बाहर पहले बेच देते थे, भेज देते थे, उसी को बाउंडेशन लगा दिए हैं। तो लोग रात को छोड़ देते हैं अपने अब पशु। छोड़ देते हैं, पूरा छोड़े हुए हैं। पिछली बार सब मौर्य साहब ने बहुत सारे वोट दिए थे बीजेपी को। नहीं तो दिए थे, तो अभी भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग विचार करेंगे कि इसको दिया जाएगा। अभी विचार नहीं हुआ। कहाँ है खेत आपका? हमारा वो है सामने उस साइड में। उधर खेत है आपका? हाँ जी, हाँ जी। पूरा खेत खा गए हैं हाँ, लोग? पूरा खा के बहली बहुत है साहब। और रात दिन खाओ, बल्ब भी लगा रखे हैं, फिर नहीं मानती हैं। रात दिन हाँकते हैं और खांसी गटे बैठ गई मेरे हाँकते हाँकते। बहुत रात भर हाँकते रहते हैं, यहाँ पे गला बैठ गया हाँकते हैं। हाँ जी, रात भर हाँकते हैं। ये सब यहीं पे आवारा। ये सब यहीं पर रहती है। हाँ। पूरा और यहाँ बैठेंगे, ये पूरा रात में खेतों में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। पूरे दिन यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका एक खेत में खाया हुआ है इन्होंने? हाँ जी, पूरे को पूरा खा रखे हैं। छुट्टा पशु को कितना दिक्कत है? छुट्टा पशु से बहुत परेशान है। इतना परेशान है कि हमारा भर्ती भी नहीं आ पा रही है। मतलब जितना लागत है वो नहीं हुई? वो भी नहीं आ रहा है। उससे इतना परेशान है किसान की अब योगी का कुछ नहीं है यहाँ पे। योगी से सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ जी, यहाँ पे अखिलेश ही किसानों आएंगे। के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सर ये छुट्टा जानवर है, किसानों के लिए। क्या नाम है? शुक्ला जी, आपका बताइए। जी सर। शुक्ला जी, सब मान रहे थे पंडित जी सारे भारतीय जनता पार्टी के वोट ऐसा है। कुछ नहीं है सर, ये कोई बात नहीं है कि पंडित जी हैं तो केवल बीजेपी के हैं। जी, हम मुद्दा देख के वोट करेंगे। जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी समस्याओं को सुलझाएगा उस पर वोट करेंगे। ये आप बता रहे थे कि पूरा खेत चर गया है। चर गया है। तो इस बार धान नहीं लगा रहे? यही से धान वान गेहूँ नहीं लगाया जाता है। क्यों? अब सारे लोग बहला लोग सब चर जाते हैं ना, तना तना मजूरी में रखो, कुछ ये सब डूबा जाता है। गौशाला में जानवर नहीं है, सारे बाहर छोड़ देते हैं क्या? तो गौशाला से बाहर आते हैं क्या ये? हाँ, गौशाला में एक भी नहीं। सर गौशाला में रखे ही नहीं गए, रखे नहीं, भूसा उसा तो वैसे पड़ा हुआ है। कुछ सामान नहीं लाते तो वो लोग कहते हैं गौशाला वाले की गांव वाले अपने जानवर छोड़ देते हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद करेगी गाय छोड़ देते हैं। कुछ नहीं काम करना है सर। गौशाला की जो बात है, गौशाला का जिस दिन उद्घाटन हुआ, सारी गायों को, सांडों को चंदन लगा के, माला पहना के एंट्री तो करवाई गई, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद गेट खोल के सबको बाहर निकाल दिया गया। कितनी गाय हैं अभी आपके पास? 384 गाय भैंस सब हाँ मिला के। तो अरविंद जी, ये जो आसपास के जगहों पे इतने छोटे पशुओं की दिक्कत है जी, तो उसमें वो ही पकड़ के लाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है? ये अगल बगल के जितने छोटे जानवर हैं उनको पकड़ के लाया जाता है यहाँ पे। तो आपके पास इतने सारे हैं, उसके बाद भी बाहर बहुत घूम रहे हैं? हाँ अभी सर हैं, लेकिन बन रही हैं गौशाले, और गौशाला बन रही है धीरे धीरे। ये समस्या है यहाँ पर छोटे जानवरों की? थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, अब ज़्यादा तो नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत समस्या है। That's all the time that we have in this edition. Our Yatra continues. Tomorrow is polling day. Please make sure you go out and poll if you are in those constituencies. See you tomorrow.